Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Understanding Criminal Justice System, and we are trying to understand our criminal justice system by a story in which we have seen that one couple is there, Mr. and Mrs. Sinde, and Mrs. Sinde, when she was not able to find out her gold chain, she was of the opinion that their maid Shanti must have stolen their gold chain. And then what happened that Shanti, Mr. Sinde asked Shanti for search, and they searched her trunk, and they found an envelope in which 10,000 rupees were there. So Mr. and Mrs. Sinde, they are very much sure that Shanti has stolen the gold chain, and then she has sold the gold chain, and she got that 10,000 from selling that gold chain only. But Shanti was saying that this 10,000 rupees is actually she and her brother had saved it for the past 1 year, and but Mr. and Mrs. India are not ready to accept whatever Shanti was saying, and then they lodged an FIR also. And after this lodging of the FIR, the police came. Sub-Inspector Rao comes in the house of Mr. and Mrs. Sinde, and he says that Shanti has stolen the gold chain. So he arrested her, and then what happened that not only this, the sub-inspector also took the money as evidence. The money that was kept in the envelope in the trunk, 10,000 amount juta, that was also taken by the police as evidence. And when his brother, Shanti's brother Susil, goes to the police station in order to convince the police that Shanti has not done any crime, she has not stolen the gold chain, what happens that the police also keeps him in lockup for 2 days. And not only this, he was abused and beaten also by Rao and other police constable, because they were trying that Susil should confess that he and his sister had they had a gang of domestic servants who are engaged in stealing of jewelry from their homes, because such incidents, this incident of theft was happening in the neighborhood of Mr. and Mrs. Sinde. So the police is trying to solve this matter, and they wanted that Susil and Shanti will accept, they will confess that they are actually leading the gang of domestic servants. But Susil was not ready to accept it, and then after 2 days he was released. And now we see that the court granted bail to Shanti on after around 1 month. And she was in jail, and after 1 month she got the bail, but still she was not able to get the benefit of bail, because she was unable to get anyone to stand surety for her for ₹20,000. है ना, बेल के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए एज अ गारंटर, जिसको कि पैसे भी देने पड़ते हैं. तो नो वन वॉज रेडी फॉर Shanti, because she was a poor lady, है ना. No one in her relation or in her acquaintances, no one was there who was ready to give ₹20,000. It was such a big amount for them, है ना. So
now she is very much traumatized because now trial is going to start, and she was thinking that what will happen during this trial, because she knows that she has not committed the crime. Still she is behind bars because Mrs. Sindhe, Mr. and Mrs. Sindhe suspects her, so now what happened that after around a month, on 14th of September 2006, the police files a charge sheet in the magistrate court, and the court gives a copy of this charge sheet including statements of witness to Shanti. Okay, this is the process. The police will file a charge sheet in which the police will frame charges on somebody, है ना, कि किसी ने क्या किया है, जो भी एलिगेशन है, जो चार्जेस पुलिस के हिसाब से जिस पे चार्ज लग रहा है उसको उसमें बताया जाता है ना, कि किसने ये क्राइम किया है. एंड देन व्हाट हैपेंस दैट इट इज सबमिटेड इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड देन कोर्ट जो है वो एक इस चार्जशीट की जो कॉपी है वो दे देता है किसको, जिस पे चार्ज लगाया गया है ना. जैसे यहाँ पर शांति पे चार्ज लगाया गया तो द कॉपी ऑफ द चार्जशीट विल बी गिवन टू शांति, एंड देयर विल आल्सो बी द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति. विटनेस कौन है यहाँ पे इस केस में, किसने विटनेस दिया है कि शांति ने चोरी की, हालांकि किसी ने देखा नहीं, स्टिल विटनेस जो है वो मिस्टर एंड मिसेस सिंधे हैं, दे आर द विटनेस. तो उनका जो स्टेटमेंट है उसकी भी कॉपी शांति को दे दी गई. एंड नाउ शांति टेल्स दैट शी हैड नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस केस ऑफ थेफ्ट, है ना. शी कैन नॉट अफोर्ड एनी लॉयर बिकॉज शी इज अ पुअर लेडी. She is not having that much money to pay for the service of the lawyer. So what happens that when Shanti says that she will not be able to hire a lawyer, so in that case the magistrate appoints Advocate Kamla Roy as Shanti's defense lawyer at the government expenses. This is the system in our judicial system, in our criminal system. If any victim or any person, not victim, if any person against whom charges have been charges are framed in the charge sheet, and if that person is not able to hire the service of the lawyer, in that situation the government on the expense of government a lawyer is appointed for that person. So here Shanti is not in a condition to hire the service of the lawyer. So see, at the expense of the government, a lawyer has been appointed for Shanti. The name of the lawyer is Kamla Roy. She is the defense lawyer. The lawyer Kamla Roy is there to defend Shanti, because Shanti पे allegations लग रहे हैं, charges लग रहे हैं, and Kamla Roy is there to defend Shanti. So she is a defense lawyer. Okay. So what our Constitution says, Article 22 of the Constitution says that every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. अगर किसी पर भी किसी भी तरह का allegation लग रहा है, charge लग रहा है, पुलिस charge लगा रही है, तो ये हमारा fundamental right है कि हमें lawyer की सर्विस मिले जो हमें डिफेंड कर सके, हमारे लिए लड़ सके, है ना. लॉयर क्या होते हैं, दे फाइट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, है ना. तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है. इट सेज, इट इज देयर इन आर्टिकल 22 दैट वी मस्ट बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. एंड देन आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability, है ना. किसी भी रीज़न से अगर कोई अपने लिए वकील की सर्विस नहीं ले पा रहा है, तो in that situation it is the duty of the state to provide a lawyer to that citizen, है ना. So in this way this Kamla Roy was appointed as defense lawyer at the expense of the government. And now we see that Kamla Roy meets Shanti in the court, है ना. वो उनकी वकील है, उनसे मिलती है, and
सो नाउ शांति को जो चार्जशीट की कॉपी मिली थी और जो विटनेसेस के स्टेटमेंट की कॉपी मिली थी, मजिस्ट्रेट ने जो दिया था, वो शांति हैंड ओवर कर देती है लॉयर को, है ना. एंड सी ऑल्सो सेज दैट सी हैज बीन falsely accused of stealing the gold chain of Mrs. Sindh. He has not stolen the gold chain actually. She says all these things to her lawyer, है ना. And now Sushil is also with Santi, and he is also saying that they found rupees 10,000 in Santi's trunk, and they are saying that this is the amount which Santi got after selling the gold chain of Mrs. Sindh, है ना. But this is not true. That amount is saved by us, है ना. Both brother and sister had saved that 10,000 rupees in the past 1 year. So all these things are told to this lawyer Kamla Roy. So the trial begins on 11th of December 2006. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि कोर्ट जो है वो एक चार्ज फ्रेम कर रही है. किस चीज़ की चार्ज है? चोरी की, थेफ्ट की. द कोर्ट इज फ्रेमिंग अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस सिंधेज गोल्ड चेन and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against शांति. ठीक है, शांति के अगेंस्ट ये चार्जेस लगाए गए. इस बात को पहले डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट में. एंड देन व्हाट शांति विल से दैट आई प्लीड नॉट गिल्टी, है ना. मैं ये कह रही हूँ, प्लीड करना मतलब प्रे करना एक तरह से. मेरी ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट गिल्टी, मैंने ये काम नहीं किया है. आई हैव नॉट कमिटेड द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन एंड आई क्लेम ट्रायल. मुझे ट्रायल करना है ना. आप जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको वो सामने आनी चाहिए, तो ट्रायल के लिए वो क्लेम करती है. तो इन दिस वे ट्रायल बिगन्स. दीज आर द प्रोसीजर, है ना. इस तरीके से काम होता है कोर्ट में. और फिर क्या होता है, जो हमने देखा अभी 11 दिसंबर 2006 को ट्रायल स्टार्ट होता है, और 8 मार्च 2007 को जो ये ट्रायल में दोनों साइड के जो लॉयर हैं, ठीक है, वो आते हैं. अब दोनों साइड के जो लॉयर है उसको आप समझ लीजिए. एक को हम कह रहे हैं डिफेंस लॉयर, और दूसरे को हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर. Here, one thing you must understand, whenever there is violation of any law, है ना, जैसे चोरी हुई, थेफ्ट हुआ, तो दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ. यहाँ पर विक्टिम कौन है? हु इज द विक्टिम इन दिस केस ऑफ थेफ्ट? विक्टिम इज मिस्टर एंड मिसेस सिंधे, है ना. दे आर द विक्टिम. जो स्टेट ने लॉ बनाया था कि चोरी नहीं करनी है किसी और की प्रॉपर्टी को, उस लॉ का वायलेशन हुआ, और उस लॉ के वायलेशन का विक्टिम कौन है? मिस्टर एंड मिसेस सिंधे, ठीक है. एंड हु इज वायलेटिंग द लॉ अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट? हु हैज वायलेटेड द लॉ? इट इज शांति, है ना. शांति हैज स्टोलन the gold chain of Mr. and Mrs. Sindhe. So she is the person against whom charges has been framed. So she has broken the law. She has violated the law of the state. तो this case, ये आपको हमेशा समझना है. यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो किसके बीच है? शांति एक तरफ है ना, जिसने लॉ को वायलेट किया है, और दूसरी तरफ उसने किसके लॉ को वायलेट किया? स्टेट के लॉ को. सो दिस फाइट इज बिटवीन शांति एंड स्टेट. इट्स नॉट बिटवीन शांति एंड मिस्टर एंड मिसेस सिंधे. इट्स बिटवीन शांति एंड द स्टेट, बिकॉज शांति हैज वायलेट. इट इज नॉट प्रूवन up till now. It is only a charge that Shanti has violated the law which was
मेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपकी बात समझ में बात आ गई। अब दूसरी चीज हम देखेंगे लॉयर्स के बारे में। जो शांति के लिए जो लॉयर अपॉइंट हुआ है, ही इज कॉल्ड डिफेंस लॉयर, क्योंकि वो शांति को डिफेंड करेगा। शांति पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, लॉयर उसको डिफेंड करेगा, है ना। लॉयर ऑफ दिस द पर्सन हु हैज वायलेटेड द लॉ, द पर्सन अगेंस्ट whom charges have been framed, his or her lawyer is called a defense lawyer, because he is there, you see, the defense lawyer is there to protect this person against whom charges have been framed. Okay, so that is why he is called defense lawyer, वो उसको डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पर जो मिस्टर एंड मिसेस सिंधे हैं, जो विक्टिम है ना, इनके मिस्टर एंड मिसेस सिंधे की तरफ से कौन ये केस लड़ेगा? द स्टेट इज फाइटिंग द केस, है ना। ये शांति ने जो किया है वो द क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट मिस्टर एंड मिसेस सिंधे, बट द क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट। So the fight is between state and शांति। So मिस्टर एंड मिसेस सिंधे के लिए कौन लड़ेगा? स्टेट लड़ेगा। और उनका जो लॉयर है उसको हम क्या कह रहे हैं? he or she is called a public prosecutor। पब्लिक मीन्स जो स्टेट ने जिसको अपॉइंट किया है एज अ लॉयर, बिकॉज स्टेट की लॉ का वायलेशन हुआ है, तो स्टेट का लॉयर होना चाहिए जो कि उसके लिए जिसने भी उस लॉ को वायलेट किया है उसको वो प्रूव करेगा कि हाँ उसी ने किया है, और उसको पनिश करवाएगा जज से, है ना। तो इस तरह से ये दो तरह के लॉयर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो जो 8 मार्च 2007 को स्टार्ट हो जाता है ये ट्रायल, और उसमें हम देखते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर एंड मिसेस सिंधे को, है ना। और उसके लिए जो सबसे उनके मेन विटनेस जो हैं वो वही मिस्टर एंड मिसेस सिंधे हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मिसेस सिंधे से सबसे पहले पूछता है कि क्या हुआ था, कैसे आपका गोल्ड चेन खोया। तो मिसेस सिंधे जो है वो उसको सारी बातें बताती हैं कि वो उसको ड्रॉर में रखती हैं और शांति ने उसको चुराया है। कोई भी बाहर का आदमी मेरे घर में तो घुसता नहीं है ना, नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति, ओनली शांति गोज इनटू माय रूम, अदर देन शांति नो आउटसाइडर गोज इनटू माय रूम। एंड मिस्टर सिंधे ने उसके ट्रंक को भी सर्च किया, तो उसमें से उन्हें 10,000 रुपीज़ मिला, जो कि उसने मेरे गोल्ड चेन को सेल करके ही उसने उस 10,000 रुपीज़ को पाया था, है ना। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो मिसेस सिंधे पहले भी दे चुकी है और कोर्ट में भी वो वही स्टेटमेंट देती हैं। एंड नाउ आफ्टर दिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नाउ डिफेंस लॉयर जो है वो आती हैं, कमला रॉय, और वो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, है ना। जो मिसेस सिंधे को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए ये आती हैं और ये फिर से पूछती हैं कि what you are saying basically is that you have not seen शांति stealing the chain, है ना। आपने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा है, that's final। ये तो this is only her suspicion, ये सिर्फ उसका डाउट है, सस्पिशन है कि शांति ने ही चुराया, क्योंकि कोई बाहर का आदमी नहीं आता। बट आपने, ये कमला रॉय कहती हैं कि आपने उसको चेन चुराते हुए नहीं देखा, और नहीं आपने शांति की ट्रंक में से, आपको चेन रिकवर हुआ, आपको शांति के ट्रंक में से 10,000 रुपीज़ रिकवर हुआ, चेन नहीं रिकवर किया आपने, है ना। और पिछले शांति इज वर्किंग इन योर हाउस फॉर द लास्ट 3 years, है ना। एंड इन दीज 3 years टाइम नथिंग हैज़ बिन स्टोलन बाय शांति। शांति ने कुछ भी आज तक किसी भी चीज़ को की चोरी नहीं की, है ना। और आप उसको हर महीने 1,000 रुपीज़ एज अ सैलरी पे करती हैं, है ना। ये सब बातें सही है। तो वो जो शांति मिसेस सिंधे थी वो उसको एक्सेप्ट करती है, ओके। एंड देन सी ऑल्सो एग्जामिन्स सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर, जो सुशील के एम्प्लॉयर है, जहाँ सुशील काम करता है, उनको भी वो विटनेस में बुलाती हैं, कमला रॉय। और जो कुछ भी उनका स्टेटमेंट होता है उससे ये यही शो करना चाहती हैं कमला रॉय कि जो 10,000 रुपीज़ मिला है
शांति के ट्रंक में एक्चुअली वो सुशील और शांति दोनों की मिली हुई अर्निंग है, जो भी उन्होंने सेव किया है वो उनका बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अभी ट्रायल जो है वो अभी और भी चलेगा, अभी आगे और भी चीज़ें होंगी। इसी में हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को काफ़ी कुछ समझने में समझ पाएंगे, है ना। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास।